नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MSc फाइनल मैथमेटिक्स के ऑप्शनल पेपर एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की स्टडी हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने एक थ्योरम्स की थी कि इफ ए ग्राफ हैज ओनली even degree cycles then it is bipartite graph। आज हम कुछ और थ्योरम्स करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर। लेट G be a graph, simple graph, it means there is no parallel edge and the loops with n vertices and k components. In components means if G is a graph of such a way, ठीक है, कोई अपने पास इस तरह का ग्राफ है, this is our G, then it has a two components, one is this one and one is this one. There are two components. So in the theorems we are saying there are k components, so there are k components which are connected, then it can have at most half of n minus k plus 1 hh। चलिए अपन प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। Let since here it is given there are k components and from each components they have some vertices, so let us assume ni such that I is equal to 1 2 to लेकर k तक be the number of vertices in each component of G। If there are components say G1 G2 Gk, so अगर component अपन ये माने Gr G1 G2 and Gk, then there are n1 vertices in G1 and 2 vertices in G2। अपन ये मान रहे हैं, अपन यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। चलिए, तो इसका मतलब कि समेशन ऑफ ni n1 plus n2 plus of nk is nothing but the n, क्योंकि G के अंदर अपन कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है। तो और इन G1 if G1 G2 and Gk are components of G, of the graph G, then maximum number of edges in G1 is, because there are n1 vertex in G1, so this is n1 minus 1 upon 2, that is n1 C2. Similarly, maximum number of edges in G2 we will have n2 minus 1 by 2 and so on। So the total maximum number of vertex in k components So the maximum number of components
maximum number of edges in all components of G are n1 minus 1 by 2 plus n2 minus 1 by 2 and plus nk and nk minus 1 by 2, and this one is one by, we can say this summation I is equal to 1 to k and half of ni square minus of ni. This is equal to summation I is equal to 1 to k, हाफ में अगर बाहर ले लेता हूँ तो दिस इज ni स्क्वायर एंड माइनस हाफ समेशन I is equal to 1 to k of ni, and summation of ni, n1 plus n2 plus nk is nothing but the n, so this becomes, this is half of summation I is equal to 1 to k and ni square minus n by 2. So we are considering this is 1. Now let us consider actually we want to find the value of this one, so we have to consider summation I is equal to 1 to k and ni minus 1. So this one is actually, this is n1 minus 1 plus n2 minus 1 and plus nk minus of 1, and this is nothing but n minus k. 1 1 1 k टाइम्स है तो k हो जाएगा, और n1 plus n2 plus nk का सम n होता है अपने पास, so we will get this one. So this implies summation I is equal to 1 to k of ni minus 1 whole square is equal to n minus k का whole square. इसको अपन दो नंबर ले लेते हैं. अब अपन अगेन कंसिडर करते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या रहेगी. तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, this 2 is summation I is equal to k and ni minus 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर. इट मीन्स दिस इज n1 minus 1 plus n2 minus 1 and plus nk minus 1 और इस पूरे का ले रहे हैं होल स्क्वायर. तो दिस गिव्स अस n1 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस n2 minus 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस nk minus 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू n1 minus 1 इंटू n2 minus 1 प्लस 2 इंटू n1 minus 1 n3 minus 1 एंड सो ऑन. जैसे अपन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू ए बी ए सी प्लस 2 इंटू बी सी. सच टाइप ऑफ टर्म्स आर देयर. इनको अगर अपन खोल लेते हैं ऊपर वाले को तो दिस इज n1 स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 2n1, तो n1 स्क्वायर माइनस 2n1 एंड प्लस 1. दूसरे से आएगा n2 स्क्वायर माइनस 2n2 एंड प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस nk स्क्वायर माइनस 2nk एंड प्लस 1 एंड प्लस a नॉन नेगेटिव टर्म or non-negative numbers. These are the non-negative numbers we will have. So
This implies summation I is equal to 1 to k ni minus 1 whole square is equal to summation of ni square, n1 square, n2 square plus nk square. This is summation of ni square. I is equal to 1 to k. And minus 2n1, 2n2, 2nk. This is nothing but the minus of twice n. This 1 is also k times plus k and plus a positive term. So we can get here हमें एक्चुअल के अंदर वैल्यू निकालनी थी समेशन ऑफ ni स्क्वायर की. तो समेशन ऑफ ni स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं. दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ni square I is equal to 1 to k is equal to summation of I is equal to 1 to k of ni minus 1 का whole square plus 2n minus k and minus a negative integer minus a positive integer a positive value we say should say the positive value. हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं. तो this value is equal to this one minus this one. तो अपन यहाँ ये ले सकते हैं. This implies summation I is equal to 1 to k ni square is less than equal to summation I is equal to 1 to k ni minus 1 the whole square and plus 2n minus k. इसको अपन ड्रॉप कर देते हैं. तो इसका मतलब इस क्वांटिटी से ये छोटी रहेगी. समेशन ऑफ ni स्क्वायर. तो दिस वन इज 3 and value of this one is n minus k whole square, and from 2 and 3 we get 2 is our this one, this one is our 2 and this is our 3. So summation I is equal to 1 to k ni square is less than equal to this quantity. This quantity is this one. This is n minus k का whole square and plus 2n minus k. And we say this one is 4. Now from first and 4, first is our the maximum number of edges in all component of G are this one. So the maximum number from first and 4, first and 4, the maximum number of edges in G are less than equal to half and the value of summation ni, this is n minus k whole square plus 2n minus k and minus n by 2. So this gives us half of n minus k whole square and plus n minus k. So this is nothing but the 1 by 2 n minus k common ले लेंगे अपन और n minus k plus 1. So if G is a graph with k components, then it have at most this number of edges.
नेक्स्ट पाथ ग्राफ a simple connected graph of such type, इस तरह का वर्टेक्स अपने पास दो, दिस वन, there are 3 vertex, 2 edges. So these are the path graph. In this graph is called the P2. We denote this one by P2. There are 2 vertices, 1 edge. This is P3. There are 3 vertices and 2 edges. And this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is P6. In P6, we are seeing that there are 6 vertices and 5 number of edges. So in a path graph, order of V is equal to order of E plus 1. So a simple connected graph is a path graph if order of V is equal to order of E plus 1, then we say that this is a path graph. इसी तरह की एक टर्म्स अपन पास और आती है साइकिल ग्राफ. Such type of graph this is called the C1 cycle, this is C2 and this is C3. If you have a cycle in a graph in which we are saying that the number of edges is equal to the number of vertices, and there are only 2 edges, there are 3 edges. In this is they have 2 parallel edges, and this is a loop, self loop. So this type of graph is called the cycle graph. चलिए कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं अपन ग्राफ की, जो अपने कनेक्टिविटी से और जुड़ी होगी. लेट जी बी ए ग्राफ be a simple graph with 6 vertices. Then either G or G bar contains a triangle. G be a simple graph with 6 vertex. G के अंदर हमारे पास 6 वर्टेक्स दे रखे हैं. 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 6 वर्टेक्स आर दिया. इसके अंदर कुछ एजेस हो सकती है. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास इस
तरह का ग्राफ हो सकता है, या इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लूँ मैं तो जो एजेस इसमें नहीं थी वो एज यहाँ पर आ जाएगी, ये एज यहाँ पर थी, तो इसके अलावा कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ वर्टेक्सेस ले लिए अपने, चलिए ले लेते हैं। This is V1, this is V2, this is V3, this is V4, this is V5 and this is V6. So I will taking this is V1, this is V2, V6, V5 and this is V3 and this vertex is V4. V2 से यहाँ दो एज थी V1 और V3 में, तो अब V2 से आपके V1 और V3 के अलावा एजेस बन जाएगी दिस वन एंड दिस वन। पहले V6 से V5 के बीच में एज थी, अब V6 से V5 के अलावा हर वर्टेक्स में एज जाएगी, तो V6 से V5 में एज नहीं रहेगी। V5 V3 और V6 के बीच में एज थी, V5 में V3 और V6 के बीच में एज थी, तो इसके अलावा सब जगह एज रहेगी। कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं अपन, तो ये एज आ गई। सिमिलरली V3 जो V2 और V4 से जुड़ा हुआ था, तो V3 V2 और V4 के अलावा सबसे जुड़ेगा अब, सॉरी V3 V2 V4 और V5 से जुड़ा हुआ था, तो V3 इन तीनों से नहीं जुड़ेगा अब, V2 V4 और V5। V2 से नहीं जुड़ा हुआ V3 अपना, इससे जुड़ा हुआ है, V1 से जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। इफ दिस इज आवर ग्राफ G देन दिस इज G बार। तो यहाँ ये करें कि अगर कोई ग्राफ G है जिसके अंदर 6 वर्टेक्स है, तो आइदर इन G और इन G बार देयर आर ए ट्राइंगल, अपने पास एक ट्राइंगल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, तो किसी एक के अंदर एक ट्राइंगल है, ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन लेते हैं लेट U be any vertex in G, then G is adjacent in G or G bar, and then U is adjacent, sorry हमने कोई एक वर्टेक्स उठाया U, वो वर्टेक्स U या तो G के अंदर या G बार के अंदर एडजेसेंट वर्टेक्स होगा। यहाँ तो हमने सारे वर्टेक्स को एडजेसेंट वर्टेक्स ले लिया। पॉसिबल है कि हमारे वर्टेक्स 6 वर्टेक्स में कोई एक वर्टेक्स ऐसे हो जो आइसोलेटेड वर्टेक्स हो, तो वो भी पॉसिबल है। ये ग्राफ है मेरा, सपोज दिस इज माई G, or if you take this is U, then this vertex is in this G is isolated, but in G bar it is adjacent vertex of all these vertex. If it is adjacent to G itself, then okay, हम ये मान रहे हैं कि कोई भी वर्टेक्स V है तो वो वर्टेक्स या तो G में एडजेसेंट वर्टेक्स होगा या G बार में एडजेसेंट वर्टेक्स होगा। मीन्स या तो G के अंदर U से कोई एज होगी या G बार में U से कोई एज होगी। G और G बार to the other vertices in G
assume that there are three vertices V1, V2, V3 in G such that these are adjacent to U। देखिए हमारे पास G के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है 6, उसमें से एक वर्टेक्स उठाया U। अब U आइसोलेटेड वर्टेक्स हो सकता है या U किन्हीं दो वर्टेक्स के एडजस्टेंट हो सकता है, एक वर्टेक्स से एडजस्टेंट हो सकता है G के अंदर। अगर U G में 3 वर्टेक्स से एडजस्टेंट नहीं है तो G बार में वो उन्हीं 3 वर्टेक्स के एडजस्टेंट रहेगा जिनमें G नहीं है, G के अंदर वो एडजस्टेंट वर्टेक्स नहीं है। मतलब U से जो एजेस डिफरेंट वर्टिसेस, तो अब डिफरेंट वर्टेक्सेस अपने U के अलावा 5 वर्टेक्स हो गए, तो U से टोटल नंबर ऑफ एजेस निकल सकती है आपके पास 5। और ये जो 5 एजेस है, ये 5 एजेस या तो G में हो सकती है या G बार में हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि 2 एज G में हो और 3 एज G बार में हो, या 1 एज G में हो और 4 एज G बार में हो। तो कम से कम 3 वैसे वर्टेक्स आपको मिल जाएंगे आइदर इन G और इन G बार सच दैट दे आर एडजेसेंट टू U। तो अगर ये वर्टेक्स U है, V1, V2, V3 के लिए अपन एडजेसेंट मानते हैं, एंड इट मीन्स देर आर, हम कुछ इस तरह की बात करें कि U इस तरह का आ गया, V1, V2 एंड V3। अब इफ देर आर any two vertices of V1, V2 V1, V2, V3 are adjacent, means मान लीजिए दो एडजेसेंट है, so this implies there is a triangle। there is a triangle। और सपोज कीजिए अदरवाइज कोई भी ये V1, V2, V3 के अंदर कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है आपस के अंदर, तो अदरवाइज V1, V2, V3 are adjacent to adjust in the complement ग्राफ। तो अगर G के अंदर ये तीनों वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है, तीनों में सारे सभी अलग अलग पड़े हैं, तो उस केस के अंदर G बार के अंदर इनके बीच के अंदर एक एज आएगी और अपने को एक ट्रायंगल मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी से कैन से दैट आइदर इन G और इन a G बार देयर इज ऑलवेज ए ट्रायंगल इफ आवर ग्राफ हैव द नंबर ऑफ वर्टिसेस 6। Next results. Let G be a simple graph then at least one of the graph
G और G bar is connected. G is a simple graph. तो मान लिया मैं कि G मेरा कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह की सी बात करें, G has two components. This is V1, V2, and this is an isolated graph. So if this one is G, then G bar is V1, V2 and V3. अब अपने पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो जहाँ एज नहीं थी वहाँ एज आपके पास G बार में बन जाएगी। अगर दूसरा एग्जांपल लूँ मैं इसका, कि अगर अपने पास ये ग्राफ है V1, V2 और सपोज कीजिए यहाँ पर अपने पास ये तीन वर्टेक्स है V3, V4 and V5. If this is our G, then G bar, this is not a connected graph, then G bar will be V1, V2, V3, V4 and V5. These are our vertex. V1, V2 के बीच में यहाँ एज है, इसका मतलब अब V1, V2 के बीच में एज नहीं होगी, V1 इन तीनों से जुड़ेगा। तो V1 इन तीनों से जुड़ेगा तो V2 V1 से नहीं, V2 इन तीनों से जुड़ेगा। सिमिलरली जो V3 है वो V4 से नहीं जुड़ेगा, V3 V1 V2 एंड V5 से जुड़ेगा। तो V3 V1 से जुड़ गया, V2 से जुड़ गया एंड V5 से जुड़ गया। इसी प्रकार V4 इन दोनों से नहीं जुड़ेगा, इनके अलावा जुड़ेगा एंड V4 से नहीं जुड़ेगा और इन तीनों से। तो दिस इज आवर G4. तो वी कैन सी दैट इफ दिस ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड देन दिस इज ए कनेक्टेड ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ अगर आपके पास है तो अगर कनेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली उसका जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ आएगा वो आपका एक कनेक्टेड ग्राफ आएगा।